So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. कुछ दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप में, जो मेरे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें मैं हमेशा कहता रहता हूँ आपसे हर वीडियो में कि ज्वाइन करो, तो वहां पर मैं नोट्स शेयर करता हूँ आप लोगों से, डिफरेंट एग्जामिनेशन पेपर शेयर करता हूँ, आप मेरे से फीडबैक शेयर करते हो अपना, आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हो मुझसे। तो कुछ दिन पहले मैंने वहां पर एक पोल किया था, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए, इस तरीके की वीडियोस चाहिए जो कि एग्जाम के दिनों में, अगर आप लेट सपोज आप नहीं पढ़ पाए, आप हॉलीडे में चले गए, कुछ इश्यूज हो गए, कुछ कंटिजेंसी आ गई, कोई बीमार पड़ गया घर पे, आप बीमारी पड़ गए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप पढ़ नहीं पाते। आपको क्या चाहिए होता है कि भाई एक कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हम जल्दी जल्दी चीजों का क्विक रिवीजन कर लें और फिर हम अपने शब्दों में जाके एग्जाम में लिख देंगे। सो इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए होती है, तो वही वीडियो मैं लेके आया हूं। यहां पर कहीं ना कहीं क्विकली मैं डिस्कस करूंगा हर टॉपिक को A to Z। आपको ये नहीं सोचना कि कोई भी टॉपिक मिस होगा, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, क्योंकि हर टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाला हूं पूरी क्लैरिटी के साथ। बट क्विक डिस्कशन होगा कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स का। सो आर यू रेडी फॉर दैट क्विक डिस्कशन? आई होप यू आर रेडी। Let's start this video where we are going to talk about specifically fundamentals of management subject, and this subject is specifically जहां पर हम क्विकली A to Z हर टॉपिक कवर करेंगे। ये हर यूनिवर्सिटी के लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है, चाहे आप बीबीए में हो, एमबीए में हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी हो, एकेटीयू यूनिवर्सिटी हो, व्हाटएवर योर यूनिवर्सिटी इज, जो जिस तरीके से टॉपिक्स उठाए गए हैं वो आपके सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करेंगे। लेटेस्ट रीसेंट सिलेबस है 2024 का, तो टेंशन लेने की बात नहीं। और इस वीडियो के बाद आपकी मोटिवेशन से, आप जिस तरीके से कमेंट करोगे उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे और वीडियोस लानी है, इस तरीके की नहीं लानी है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। Fundamentals of management, quick discussion of all the topics. Let's start with understanding what exactly is management, because the name of the subject itself is fundamentals of management. So अगर आप सुनते हो इस वर्ड को मैनेजमेंट, तो सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है मैनेज करना। मैनेज किसको करना? इन बिजनेस टर्म्स वी आर गोइंग टू मैनेज आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर कंपनी, ओके, आवर बिजनेस बेसिकली। सो जब हम कोई कंपनी चलाते हैं, कोई हम कंपनी की शुरुआत करते हैं, तो हम उसके लिए प्लान करते हैं। कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मैन, इट कैन बी मटेरियल, इट कैन बी फाइनेंसेस। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दोस रिसोर्सेज, you are going to give direction, or you're going to lead people in the organization, as well as you'll try the optimum utilization हो resources का, you'll try to have that leadership, you'll try to motivate people who are working in the organization, you'll try to create a workforce environment in the organization, you're directing somehow, and then you're controlling, and it's a continuous process, it goes hand in hand. So what I'm trying to mean here is कि management, it's about these four functions. And what are these? Planning, organizing, directing, जिसको हम leading भी कहते हैं, and controlling. So management refers to the process of planning, organizing, directing, and controlling. And what you're planning, what you're organizing, what you're directing, and what you're controlling, the resources. It can be men, it can be people, it can be finances, it can be material. And why you're doing it? In order to achieve your goal. At the end of the day, it is all backed up by your goal. So you want to achieve that goal efficiently and effectively. So for that reason, you're doing it. So management, once again, management is a process of planning, organizing, leading, and controlling. When we talk about management, we talk about the four functions in the management, and these are planning, organizing, directing, controlling. बार बार मैं repeat कर रहा हूं ताकि आपको clear हो जाए. Let's talk about one of the definition of management, and it's by, जो मैंने डेफिनेशन ली है, इट्स बाय हेरोल्ड नूट्स, जिन्होंने कहा कि मैनेजमेंट इट्स बेसिकली इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू and with people in formally organized groups. So that's what the definition of management is. Let's move आगे और हम बात करते हैं nature and scope of management की. So let's talk about the nature of management. When we talk about nature of management, what we are talking about is basically we are talking about its features. आप मुझे खुद बताओ मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हो सकते हैं? First of all, it is something which is universal. Like management की हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होगी, be it a public sector organization, be it a private sector organization. हर ऑर्गेनाइजेशन में भाई मैनेजमेंट की जरूरत है, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जरूरत है, बिल्कुल है। तो इट इज समथिंग विच इज यूनिवर्सल। हर जगह ये यूनिवर्सल है, क्योंकि मैनेजमेंट की तो हर जगह ही जरूरत पड़ेगी, वेदर इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ पब्लिक और अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड फीचर इज इट इज गोल ओरिएंटेड. At the end of the day, you have to remember that why you're doing it.
It's what your mission is, what your vision is, what's your company's mission and vision is. So what I'm trying to mean here is कि goal जरूर होता है कोई ना कोई. So this is one of the second feature of management कि it is always goal oriented. So whatever you're doing in the organization, the planning you're doing, the organizing you're doing, the directing you're doing, the controlling you're doing, back of the mind mein, you just have to remember that you have to achieve your goal, and that's why you're doing it. Another important thing is it's not something कि भाई एक बार आपने की done, planning कर ली खत्म, organizing कर ली खत्म. Like, it's a continuous process. You continuously have to plan, organize, direct, controlling these things. It you know, it moves like a cycle. You have to continuously work on that. You have to continuously plan, you have to continuously organize, direct, and control. Another important feature is multidisciplinary approach. When we talk about management, there are different subjects that we have to study, like it's, and that's why it's a multidisciplinary study. Like we have to study economics for that, we have to study psychology, we have to study sociology and more. और I hope BBA में और जो भी मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहा है उसको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी बिजनेस की, बिजनेस में हमें हर पहलू को देखना होता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग. सो that's why it's a multidisciplinary approach. Another important function or feature of it is that it's a group activity. You can't say that, you know, even if you are an entrepreneur, if it is a sole proprietorship, you need certain kind of people. You need people. So definitely it involves working with people. It's not an individual effort, and it's not something that you can do alone. You have to be with people, and together only you can. And हमारे चैनल का भी मोटो यही है, टुगेदर विल मेक थिंग्स सिंपल. इट्स नॉट लाइक मेरे ही एफर्ट्स हैं, आपके भी एफर्ट्स हैं, एंड टुगेदर हम कहीं ना कहीं ये चीज कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल हो रहे हैं चीजों में कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो. सो ये एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स हैं. इट्स नॉट लाइक मैं ही चीजें कर रहा हूँ, आप भी तो पढ़ रहे हो, आपके भी तो एफर्ट्स हैं यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में भी चीज काम करती है. इट्स ऑल्सो ए ग्रुप एक्टिविटी. लेट्स टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट नाउ. सो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है? आपको प्लानिंग और को एक्सप्लेन करना है. आपको बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड वन मोर फंक्शन जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग पीपल. सो यू हैव टू टॉक अबाउट प्लानिंग, like deciding what to do and how to do it. You have to explain about organizing, like how you're arranging the resources, the people, the task and everything, how you're delegating the task, how you're giving the power. Staffing, about recruiting the right kind of people at the right kind of job at the right time also. Then leading, it's about, you know, motivating and guiding employees, because without motivation आपके efforts जो हैं वो ज्यादा दिन तक काम नहीं आएंगे. You have to continuously provide, as a leader you have to provide motivation. And controlling, like monitoring the performance, observing the performance, and making adjustments as so that we can achieve the goal. So these are all things that you have to explain in the scope of management. Let's move आगे और हम बात करते हैं अब सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला तो यही है कि what we have to do is we have to achieve organizational goals. We have to achieve our organizational goals. Whatever, we have to move ahead keeping in mind what the mission and vision of our company is. At all point of time we have to remember it. So management definitely helps in setting and achieving organizational goals. Then another important significance of management is when we do this planning, when we do this organizing, directing, controlling, हम कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं. एंड इट्स रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वेस्टेज नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज का. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग actually is by managing resources effectively, you are reducing the wastage and you're ensuring that profit margin kahin na kahin aapka increase, or ultimately you have to focus on profit at the end of the day. So for that also it is important. Another important significance of management is increasing efficiency. So of course through planning and organizing, management helps in improving the productivity. Another important feature is it improves employee motivation. So you're providing leadership and clear direction. So what you're doing is you're enhancing the employee satisfaction and productivity, creates a dynamic organization. So you know, somehow management, it prepares the organization to adapt to changes, you know, because it's a, if you're working in an अगर आपने कहीं कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, so आप इस बात से अवेयर होगे कि
situation keeps on changing and you have to get accustomed to those changes. If not, competitor आगे बढ़ जाएगा. So change के साथ cope up करना, it's really very important. So it creates that dynamic organization as well. Evolution of management. We will talk about here that how this management has evolved. So we'll talk about the very very important terms here. So first we'll talk about Frederick Taylor's contribution in the evolution of management. सो टेंशन लेने की बात नहीं है, 10 मिनट हो चुके हैं, मेरे को पता है, आप शांत रहो, मैं सारे सेक्शंस कवर कर लूंगा 1 घंटे के अंदर, ट्रस्ट मी. लेट्स स्टार्ट विद evolution of management, where we're going to talk about Frederick Taylor's scientific management theory. So let me tell you, Taylor is also known as, just remember this, that Taylor is also known as the father of scientific management. एंड उसका जो अप्रोच था फोकस करने का और इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का, कहीं ना कहीं वो उसने कई सारी बातें प्रपोज की कहीं ना कहीं टेलर ने मैनेजमेंट के लिए. उसने कहा टाइम एंड मोशन स्टडीज कहीं ना कहीं उसने की. उसने कहा कि ही बेसिकली studied that how tasks were done to eliminate the wasted effort. He was also focused on standardization, like he introduces standards for tools, equipment and work methods कि एक standard set हो जाना चाहिए और फिर उस standards के हिसाब से ही काम होना चाहिए. उसी ने कहीं ना कहीं फ्रेडरिक टेलर ने ही शुरुआत की कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर की, जो हम अभी भी फॉलो करते हैं. सो डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली दैट हमारी डिफरेंट आज के टाइम पे लाइक even in the software development process we have agile methodology, we have waterfall methods. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ोगे आगे आने वाले दूसरे सब्जेक्ट्स में, especially if you're working, if you will work in future as a business analyst, आपको agile framework के बारे में समझना होगा, agile methodologies के बारे में समझना होगा. तो वहां पर agile methodology के ही अंदर एक स्क्रम फ्रेमवर्क होता है जहां पर हम बात करते हैं कि जो बड़े बड़े टास्क हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनको स्मॉलर टास्क में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उन स्मॉलर चंक्स या स्मॉलर टास्क में काम करें और उस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करें. क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल चंक्स में बांट देते हैं तो उन स्मॉल चंक्स में काम करना इजी होता है. आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो उन चंक्स को, रादर देन इफ यू आर वर्किंग एज अ होल ऑन अ होल प्रोजेक्ट, ऑन अ होल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. सो डिवीजन ऑफ लेबर की बात भी फ्रेडरिक टेलर ने ही कही. अदर देन दैट उसने कहा कि इंसेंटिव बेस्ड पे होना चाहिए. उसका ये मानना था कि जो वर्कर्स हैं दे शुड बी पेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस टू in order to motivate them. Now let's talk about Max Weber's bureaucratic management. So Weber basically introduced this bureaucratic model to ensure the efficiency and effectiveness in large organizations specifically. So उसने कई सारी चीजों की बात करी जो कि हम आज follow कर रहे हैं in our organizations, and one of the first is hierarchy. Hierarchy set होनी चाहिए, एक क्लियर डिफाइंड लेवल्स ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि पता हो कि हमें किसके पास जाना है. वी हैव टॉप लेवल मैनेजमेंट, वी हैव बॉटम लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो वी हैव डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स सेटअप. सो वही बात कहीं ना कहीं मैक्स वेबर ने कही हायरार्की के बारे में कि क्लियरली डिफाइंड लेवल्स होने चाहिए अथॉरिटी के एंड अ चेन ऑफ कमांड. रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, फॉर्मल रूल्स always ensures this consistency and discipline. अगर rules and regulations नहीं होंगे, कोई कुछ भी कर रहा होगा, messed up situation हो जाएगी. So that's also one of the proposed thing by Max Weber. Another important thing by Max Weber is impersonality. Like decisions should be made based on rules. You're not going to make decisions in a flexible manner कि भाई उस situation में मैं ऐसा कर दूं. नहीं, सिचुएशन के हिसाब से नहीं, कुछ रूल्स होंगे उसके हिसाब से ही आपको डिसीजंस लेने, नॉट फ्रॉम योर पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ कोर्स. एंड उसने स्पेशलाइजेशन के बारे में भी कहा कि ईच एम्प्लॉय मस्ट हैव अ स्पेशलाइज्ड रोल, जो कि हम आज फॉलो करते हैं. वी हैव अ डिफरेंट टीम फॉर बिजनेस एनालिस्ट, वी हैव अ टीम फॉर डेवलपर्स, टेक्निकल टीम अलग है, देन आईटी टीम अलग है, आर&डी टीम अलग है, सेल्स टीम अलग है. सो ईच एम्प्लॉय हैज बेसिकली एज अ individual role or a specialized role, और उसको अपने specialized role को कहीं ना कहीं fulfill करना है, and that definitely leads to expertise and efficiency. Last but not the least, let's talk about Henry Fowell.
उसने भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और हेनरी फॉयल का स्पेसिफिकली जो हम आज बात करते हैं, फॉयल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होते हैं. सो वी नॉट गोना टॉक अबाउट ऑल द 14 प्रिंसिपल्स, एंड but we have talked about Henry Fowell's 14 principle in the full playlist that we had. उसका भी link आपको मिल जाएगा description में. But here we're going to talk about some very important principles. So basically what I'm trying to mean here is that Foyle introduced 14 principles of management, and he was really focused on the top level management. So some of the key principles, let's talk about. One of the first is division of work. So according to him, and that's true too, that specialization, it increases productivity. If you look at any organization, we have different departments. We have sales department, we have marketing department, we have R&D department, और हर डिपार्टमेंट के अपने गोल्स होंगे. ओवरऑल कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना होगा. तो जब ये स्पेशलाइजेशन है तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं चीजें आसान भी होगी. अगर स्पेशलाइजेशन नहीं होगा तो हौच पौच हो जाएगी, एक कहीं ना कहीं मेस्ड अप सिचुएशन हो जाएगी, एक वेग सिचुएशन क्रिएट होगी. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क हो, क्योंकि स्पेशलाइजेशन विल ऑलवेज लीड टू प्रोडक्टिविटी. Another important principle of Foyle is authority and responsibility. We'll talk about authority and responsibility after some time, but right now I'm just telling you about authority and responsibility. That managers, they have this authority to give orders and ensure that their responsibilities are fulfilled. Another important principle is unity of command. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि बेसिकली इंप्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. अब 10 लोग अगर इंप्लॉय को कोई चीज बताएंगे ना, इवन अगर 10 लोग अगर आके आपको कोई फीडबैक देगा तो ऑफकोर्स आपको बुरा भी लगेगा, एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज भी हो जाओगे. तो कहीं ना कहीं एक सुपीरियर होना चाहिए, और वही आपको कहीं ना कहीं जो भी फीडबैक है, जो भी इन्फो है आपको चाहिए, वही आपको दे. कहीं ना कहीं एक यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए. एम्प्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन. अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन, यानी कि क्लियर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए from top to bottom. And if you look at any multinational company, और उसका hierarchical level इस तरीके से सेट किया जाता है, because they are all focused on this scalar chain principle by Foyle, और सभी इसको कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं. एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए from the top to bottom. I'm really sorry, bottom. Another important principle that I'm going to talk about here is equity. Like, there should be fair treatment to every employee. मैं आपको एक बात अभी भी बता दूं, इवन नाउ इन हम बोलते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें सबको ट्रीट करना है फेयरली, रिस्पेक्टफुली. बट आई हैव वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि इस टाइम में भी, वी आर इन दिस सेंचुरी, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इवन नाउ पीपल जज ईच अदर बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, हाउ दे लुक, and even how they talk, and they really, मतलब कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं लोग. तो कहीं ना कहीं अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, मैनेजर्स की तरफ से भी, एम्प्लॉइज की तरफ से भी, और वो वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है. सो डेफिनेटली एक वन ऑफ द प्रिंसिपल ये भी है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मोटिवेटिंग फैक्टर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का ये भी होता है कि कोई इसको जज नहीं कर रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, उसको फेयरली ट्रीट कर रहे हैं, कंपेयर नहीं किया जा रहा है. कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, आप सभी जानते हैं. बट क्या वो चीज फॉलो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में? आप जरूर बताना, जब कल को आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, आप मुझे बताना कि क्या वो चीजें फॉलो हो रही है. ग्राउंड रियलिटी है कि वो चीजें फॉलो नहीं हो रही है. खैर, हम टॉपिक से भटक रहे हैं. सो इक्विटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वेयर it has been said that management should treat employees fairly and respectfully. So इस तरीके से हमने यूनिट 1 और बेसिकली सेक्शन 1 जो है कहीं ना कहीं खत्म कर लिया है. लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 2. अब हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट फंक्शंस की. लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन. मैनेजमेंट फंक्शन आप ऐसे याद कर सकते हो, PODC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. नाउ let's break them down. First, we're going to talk about planning. Now, planning is basically just, I've told you like few minutes ago during the starting of the lecture that planning is
इट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप प्लान कर रहे हो कि कल आपको 3 घंटे पढ़ना है और आपको ये एक पर्टिकुलर साइंस का एक चैप्टर जो है वो कवर करना है. सो व्हाट यू आर डूइंग इन प्लानिंग, यू आर नॉट जस्ट डिसाइडिंग कि आपको 3 घंटे पढ़ना है, बट आप ये भी डिसाइड कर रहे हो कि आप कितने ब्रेक्स लोगे इन बिटवीन, आप देख रहे हो कि क्या पढ़ोगे आप. सो यू डिसाइडिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड दैट्स व्हाट प्लानिंग इज. Planning is about setting goals, it's about deciding how to achieve them, it's about deciding what task you need to do to complete it. So it involves, you know, all those decisions in advance. You're deciding all those things in advance, that what to do, when to do, and how to do it. That's what planning is in simple terms. Then let's talk about organizing. Organizing means you're arranging resources. When I talk about resources, it can be people, it can be finances, it can be machinery, and you're doing it in a synchronized way, you're doing it in a structured way so that you can achieve the goals, of course. So whatever you have decided in the planning stage, now for that you are arranging the resources, you are working on the resources, and you are ensuring that you create a structured way to achieve your goals. So here in this step, in organizing, we define roles, we define responsibilities, we decide किसके पास कौन सी पावर होनी चाहिए, and we delegate the authority also. Let's talk about directing now, जिसको हम लीडिंग भी कहते हैं. So डायरेक्टिंग में हम बात करते हैं मोटिवेशन की, डायरेक्टिंग में हम बात करते हैं गाइडेंस की, डायरेक्टिंग में हम बात करते हैं लीडरशिप की. हम बात करते हैं लीडरशिप, लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बिकॉज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का उसमें काम करने वाले वर्कर्स, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज. आर दे मोटिवेटेड इनफ कि वो अपना काम सही से करें? Because motivation plays a very, very important role. Like when I was working in an organization, I really, you know, at the at the end of the day, you need this motivation कि आप अगले दिन आके काम कर सको. And it's not just about monetary benefit. It's not just about कि आपको monetary motivation मिले, but it's also about कि आपको mental genuine motivation मिल रही है. Not कि वो कोई आके fake way में आपसे चीजें बोल रहा है, but genuine praise. That's what you crave for, and that's what you need as a human. So डेफिनेटली डायरेक्टिंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है मैनेजमेंट का, विच इन्वॉल्व्स गिविंग इंस्ट्रक्शन, मैनेजिंग टीम्स, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप. ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें होती है, हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं. एंड देन वी हैव द फोर्थ मैनेजमेंट फंक्शन, दैट इज controlling, where we try to control. As the name suggests itself, we try to monitor the organization's performance, making sure that it aligns with what the plan is. So कहीं ना कहीं प्लानिंग और कंट्रोलिंग साथ में चलते हैं. What you have decided, what you have planned, क्या वो हुआ है? That's what you check in the fourth management function, that is controlling. So there are different techniques also for controlling. We'll talk about it. So yeah, let's talk about planning, first management function in detail. Let's try to understand the concept of planning. So planning is basically, it's a process of thinking about and organizing the activities which are required to achieve the desired goals. You try to decide the to-do list basically, and it is a first and the most crucial function of management, because it lays a foundation for all the other functions, because planning के बाद ही आएगी organizing, directing और controlling. So it lays a foundation for all the other functions as well. Let's talk about what are the objectives of planning. One of the first objective of planning is setting clear goals. You have to set clear goals. Clearly आपको define करना है what your mission is, what your vision is, and what you want, where you want to see yourself. That's what my vision is actually. And what are your values basically. You have to set your clear goals and where you want to see yourself in the coming year or in the coming month or whatever it is. And basically what I'm trying to mean here is your goals should be smart. It should be smart. It should be smart. When I say smart, that is specific and measurable, attainable, relevant, and time bounded. Let's talk about another important objective of planning is to reduce uncertainty. जब आप पहले से ही प्लान करके चलते हो, डिसाइड करके चलते हो चीजें, तो आप एंटिसिपेट करते हो चीजों के लिए, तो आप अनसर्टेनिटी से निपट सकते हो, आप रिस्क से निपट सकते हो और उनके लिए स्ट्रेटेजीज तैयार कर सकते हो, उनसे डील करने के लिए स्ट्रेटेजीज तैयार कर सकते हो. Efficient resource use. Of course, when you're planning, you're trying to avoid the wastage also. So planning ensures optimal use of resources by defining how they will be used to achieve goals. Coordination. So that's also one of the objective of planning, that
it brings coordination, it brings that synchronization between various departments and teams by aligning their activities toward a common goal. Then it also improves decision making through planning. Managers, they can make informed and rational decisions. Let's talk about importance of planning now. So सबसे पहली इम्पोर्टेंस प्लानिंग की कि it gives direction. So when you set clear goals, by setting those clear goals, you are actually telling employees that so these are our goals and now that's what we have to do to achieve them. So it sets clear goals and guides employees on how they can achieve them. Also it reduces risk and uncertainty. Again, जो भी हमने objectives में बात करी वही हम importance में बोल रहे हैं. It focuses on goals, it helps in decision making, and also it facilitates control. So it establishes those standards against which actual performance can be compared, and that's what makes it easier to take corrective actions if needed. Now let's talk about different forms of planning. क्या क्या forms हो सकते हैं planning के? So there are several forms of planning that is in your syllabus that we have to talk about depending upon the level and the scope. So one of the first is strategic planning. Strategic planning, basically it's a long term planning that focuses on overall direction of the organization. If you look at the overall direction of the organization, like where the organization see itself in 3 to 5 years of time. So that's what the strategic planning is. It's like long term planning. But if you look at tactical planning, another form of planning, tactical planning, it's a medium year planning, like typically which is 1 to 3 years. That translates basically the strategic planning into specific actions. So it's typically done by middle level management only, and strategic planning is done by the top level management. Then we have operational planning, like jab day to day operations mein hum jo lagate hain, like it's very short term, like whatever decisions you have to make as a manager when you have conflicting priorities, or maybe you have multiple stakeholder reflect or multiple deadlines. So whatever the decision that you are making uh, on the ground at that particular time, वो operational planning में आता है. It focuses on the routine operations of the organization, and it is usually done by the lower management. Then another form of planning is contingency planning. Like if you're planning for, the name suggests itself, if you're planning for any contingency, any unexpected event, any emergencies, to ensure the organization can continue to function even in those uncertain situations, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं contingency planning का इस्तेमाल करते हैं. Let's talk about different techniques of decision making. So there are several techniques that we have to talk about in order to make good decisions, effective decisions, informed decisions. Specifically managers जो decision लेते हैं वो informed decisions हो, अच्छे decisions हो, उसके लिए इन techniques को अगर आप follow कर रहे हो तो आप ले पाओगे अच्छे decisions effectively. And one of the first is, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, SWOT analysis. SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threat, जिसमें strength और weakness जो है वो कहीं ना कहीं आपके internal factors हैं, opportunities और threats जो है वो आपके external factors हैं. एक separate video में, एक single video I think 4 या 5 मिनट की, उसमें मैंने SWOT को explain किया है. You can watch that video, link मैं description box में दे दूंगा. Another technique for decision making is cost benefit analysis. You try to weight the cost of a decision against its benefit, कि भाई इतनी कॉस्ट लगाई बट उसका बेनिफिट ये है, उसका रिटर्न ये है, एंड that basically enable you to choose the best option with the most favorable balance. Then another important technique of decision making कि आप brainstorming कर सकते हो. Like there is a group और वो brainstorming कर रहा है, different ideas search कर रहे हैं, ideas proposed हुए हैं, and then you come to a common point. So a group activity is what brainstorming is, where ideas are proposed and without criticism, everyone is listening to each other's ideas and then coming to a common point, and that enables creative thinking as well. You can also follow Pareto analysis. That is also one of the decision making technique. Pareto analysis को हम 80-20 rule भी कहते हैं. आजकल वो काफी popular है कहीं ना कहीं. So it basically focuses on identifying the few key factors, only few key factors that can cause the most significant results. So you try to find this cause and effect relationship. So क्योंकि ये कहा जाता है कि 80% of the effects, they came only from 20% of the causes. So that's what it focuses on, Pareto analysis. Let's talk about the last topic of this section, and that's what that is
process of decision making. So let's talk about the different steps involved in the process of decision making. माफ कीजिएगा कैमरा थोड़ा हिल गया है तो let me just adjust it again for you. Okay, yeah. आई होप आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही है. वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं जी हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है. और इस तरीके की हमें और भी वीडियोस जो है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, बट आई हैव टू कवर दिस वीडियो जल्दी जल्दी आपके लिए. और आई थिंक मेरी स्पीड इतनी भी ज्यादा नहीं है, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें. सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग स्टेप का सबसे पहला जो स्टेप होता है, धीरे धीरे चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे में हम कवर कर लेंगे. दैट इज the first step is identifying the problem. You have to identify what your problem is first. कहते हैं half of the problem solve itself अगर आप problem को अच्छी तरीके से identify कर लो. So that's one of the first step is you have to define the problem, the nature of the problem, so that you can, if you can understand the problem, you can come up with options on how to solve it. So that ultimately requires a decision again. So you have to clearly define the problem or opportunity. So once you have decided what your problem is, once you have identified the bottlenecks, the problems, whatever the issue is, the underlying problem is, now in the second step you have to gather information. So when I say you have to gather information, you have to collect only relevant data. It's not like कि भाई बात हो रही है sales की, आप collect कर रहे हो data marketing से related. So no, you have to collect relevant data only related to that particular problem, focusing on that particular problem only, not just other steps, other stuffs, and so that you can understand the situation and consider all possible options. So after you're done with gathering information, in the first step you have identified the problem, the second step you have gathered the information, in the third step you have to identify the alternatives. Basically you have to brainstorm, sit with other colleagues, other people, and you have to brainstorm and list out all the possible solution or courses of action, and out of those you have to choose, you have to evaluate alternative. So in between, before choosing the best alternative, we have this fourth step where we have to evaluate the alternative. So you have to analyze the alternatives, and वहां आपको फिजिबिलिटी चेक करनी होती है बेस्ड ऑन कॉस्ट, बेस्ड ऑन बेनिफिट्स, क्या है रिस्क, क्या रिस्क हो सकता है, अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स, टाइम भी आपको देखना होता है. एंड देन इन द फिफ्थ स्टेप यू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. You select the option that best suits fits the goals and available resources of the organization. And in the sixth step, you have to implement the decision. You have to put the chosen solution into action. जब तक action में नहीं लाओगे तो फायदा क्या? And यहाँ पर आपको communicate भी करना होता है employees के साथ उस decision को, आपको टाइमलाइन सेट करनी होती है और रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है. एंड एट द एंड ऑफ द स्टेप यू हैव टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट व्हाटएवर यू हैव इम्प्लीमेंटेड. इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको पता चल जाएगा ना कि क्या उसका फायदा आ रहा है, तो आपको मॉनिटर करना है उसके आउटकम को, बेसिकली उसके रिजल्ट को, कि भाई डिसीजन तो हमने ले लिया बट डिसीजन का क्या फायदा रहा, क्या वो डिसीजन वर्क किया या नहीं जो हमने एक्सपेक्ट किया था. इफ नॉट यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन. तो ये जो है वो कहीं ना कहीं 7 स्टेप्स हैं. सो आई होप आपको सेक्शन 2 भी समझ में आया होगा जहां पर हमने स्पेसिफिकली बात करी है प्लानिंग की. लेट्स मूव टू सेक्शन 3 विदाउट एनी डिले, वेयर वी आर गोना टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. अगेन, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेस एंड टास्क इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. एंड व्हाई यू आर डूइंग इट? इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स. एंड नॉट जस्ट दैट, ताकि स्मूथ वे में ऑर्गेनाइजेशन चले, ऑर्गेनाइजेशन की सारी टीम्स चले, सारे डिपार्टमेंट्स चले. क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं अपने गोल के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू अचीव द होल ऑर्गेनाइजेशंस गोल. सो इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग व्हाट टास्क नीड टू बी डन, हु विल डू देम, डेलीगेटिंग पावर टू द पीपल, गिविंग देम अथॉरिटी, किस तरीके से टास्क को ग्रुप किया जाएगा, किसको क्या स्पेशलाइज्ड वर्क दिया जाएगा, कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, और ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होती हैं. सो सिंपल टर्म में अगर मैं सम करूं, इफ आई एम गोइंग टू सम इट अप फॉर यू, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट पीपल, मटीरियल, टेक्नोलॉजी, they are all in place to implement the plans and reach the goals of the organization. Let's talk about nature of organizing. So organizing ka nature sabse pehla hai division of work. Like whatever the tasks are, whatever the projects are, you have to divide it into smaller chunks. बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क हैं तो आपको उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आप उनको
क्योंकि यार जब आप स्मॉलर टास्क में काम करते हो ना, इट रियली बिकम्स ईजियर फॉर यू. सो that's one of the first feature of organizing, division of work. Another is coordination. Of course organizing का second feature ये भी है कि you're doing it in order to have that synchronization between the different departments of the organization so that people can work together toward the common goal. Another important nature of organizing is hierarchy. Like there's a clear structure of authority with different levels of management. We have different top, middle and lower level of management. So कहीं ना कहीं एक chain of command चल रहा है उन सारी चीजों में. Another feature of organizing is flexibility. So the organizing structure, it should be adaptable to change also, so that because situation keeps on changing. Not every day is a new day if you're working in an organization. Okay, deadlines keeps on changing, market keeps on changing, customer pattern keeps on changing, everything keeps on changing. So you have to work in such a way that you get accustomed to it. So definitely it can adjust to new challenges and opportunities. So that's one of the feature of organizing: flexibility. Clarity in role. Each individual, they knows their responsibility, what they're good at, what where they can bring their expertise in. So that also reduces confusion in decision making. Let's talk about next topic, which is delegation of authority. देखो डेलीगेशन का क्या मतलब होता है. बेसिकली इट इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर असाइन पार्ट ऑफ देयर टास्क. सो व्हाट दे आर डूइंग इज, अब हर काम मैनेजर तो नहीं कर सकता. सो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू डेलीगेट some of the work to their subordinate, to the people who the manager is leading, or that particular manager will also give some decision making power to finish off that task or that work while still holding that responsibility for the outcome. So that's what delegation of authority is. It is basically the process by which manager assign the part of their task and decision making power to their subordinate, or the people who are working under them. Key aspects of delegation of authority is that delegation, it doesn't mean that you're doing it, delegation doesn't mean abdication. First of all, at the end of the day, manager remain accountable for the final results even though the task is delegated. But who is going to be responsible for the work? कल को अगर कुछ गलत हो जाए, manager. Another important aspect of delegation of authority is trust. Like you have to trust. Like if you're a manager, you have to trust your subordinate कि वो काम कर लेगा. आपको एक hope लेके चलना है कि वो decision ले लेगा सही. So while delegating authority, you have to trust your subordinate. You have to trust the decision of your subordinate. And when you're delegating authority, it's also about empowerment, because you're empowering the other person. उसको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फील होगा और वो कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्यूचर में लेगा, क्योंकि उसको ये कहीं ना कहीं मेंटली ये चीज बहुत अच्छी लगेगी कि उसे इंपॉर्टेंस फील होगी, ऑर्गेनाइजेशन में सिग्निफिकेंट फील होगा और वो आगे और अच्छा करने की कोशिश करेगा. सो डेफिनेटली व्हेन यू आर डेलीगेटिंग अथॉरिटी, इट्स अबाउट एम्पावरमेंट आल्सो. सो वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एम्पावरमेंट टू. What are the steps in a delegation? So assignment of task. So manager assigns a specific task to subordinate, then granting authority and creating this accountability. Okay, so the subordinate is now accountable for completing the task, but keeping in mind that manager is ultimate, the person who is responsible for all if something goes wrong. Next topic that we're going to talk about is authority and responsibility. Let's try to understand कि authority क्या है और वो responsibility से किस तरीके से अलग है, responsibility authority से किस तरीके से अलग है. Now, when we talk about authority, it's like we talk about it in more formal terms. Like authority it is the power to make decisions. Like I am the person who has given this authority कि ये काम कर सकता है, यानी कि मुझे वो formally power दी गई है. I'm the only responsible person, that's a different thing. But if I don't have any power or any authority, can I do this? No, I can't. So कहीं ना कहीं प्रॉपर मिक्स होना चाहिए दोनों. What I try to mean here is कि अगर आपको सिर्फ अथॉरिटी दे दी गई, सिर्फ पावर दे दी गई, बट यू डोंट हैव दिस सेंस ऑफ फीलिंग कि आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगेन आप वो काम अच्छे से नहीं करोगे और कहीं ना कहीं वो आप इफेक्टिवनेस उस काम में नहीं ले पाओगे. या अगेन इफ आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो काम कर सकते हो बट आपको पावर नहीं दी, तब भी गलत है. तो कहीं ना कहीं मिक्स होना चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए.
क्लियर है ना आपको? आई होप क्लियर होगा. So authority, it's like giving power. It's like power to make decisions, or give orders and enforce the obedience. So it definitely comes with a formal position in the organizational hierarchy. बोलते हैं ना कि उसको ये अथॉरिटी मिली है कि वो फायर कर सकता है लोगों को, यानी कि it's like उसके पास ये पावर है. Okay, like for example, a manager has this authority to assign tasks to employees, or employees को मना नहीं कर सकते. They can have this healthy discussion कि I'll do it tomorrow or I'll do it later, but you can't say that I'm not going to work according to you. You can't say this to manager. Manager को ये authority है कि वो आपको task assign कर सकता है. Then if you talk about responsibility, it's like the obligation to perform assigned task and be accountable for them. So when someone is given the responsibility, they are expected to complete the task and be accountable for the results. Let's try to understand next topic, the second last topic of this section 3, centralization and decentralization. Let's talk about centralization. So if you look at any centralized organization, दो तरीके के होते हैं. होता है centralized organization, एक होता है decentralized organization. In a centralized organization, the decision making power it's mainly at the top level of management. So whatever decision making power is, वो top level management के हाथ में होती है. So वहां पर lower level management का कोई भी interference नहीं होता है, employees का कोई interference नहीं होता है. They have this little autonomy in decision making. Advantage क्या होंगे centralization के when this decision making power is concentrated at the top level management only? Like डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनी की मिशन और विजन को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो डेफिनेटली जब जो विजन को अच्छी तरीके से समझता है, वो कंपनी की डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकता है. एंड इट्स ऑलवेज इजियर टू मेंटेन कंट्रोल आल्सो ओवर द ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इफ द डिसीजन मेकिंग पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. Whereas disadvantage ये होगा कि कहीं ना कहीं slower decision making process होगा, because you need the approval from higher ups. Another important thing is that it can lead to demotivation also at lower levels, because उनसे कोई decision और उनसे कोई input लिया ही नहीं जाएगा. On the other hand, if we talk about decentralization, so here in decentralization, जो decision making power है, कहीं ना कहीं ये distributed है. So it is distributed to lower level of management or even employees. So यहाँ पर ये allow किया जाता है कि जो decisions हैं, they should be made closer to where the actual work is performed. Actual work कहाँ हो रहा है? In the middle level management, in the lower level management. तो कुछ हद तक जो कई सारे decisions होंगे, वो उनके हाथ में भी होने चाहिए, उन मैनेजर्स के हाथ में भी होने चाहिए, सबऑर्डिनेट्स के हाथ में भी होने चाहिए, और कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन इसी बात पर फोकस करती है. And if I talk about what organization uses, whether organizations are centralized or decentralized nowadays, so like most organizations uses a combination of this centralization and decentralization, and it really depends upon the size, structure, and the nature of their organization. Let's talk about the last topic of this section, span of control. स्पैन ऑफ कंट्रोल कि भाई आपके कंट्रोल का दायरा क्या है. अब कोई मैनेजर भी होगा तो ऐसा तो नहीं कि किसी मैनेजर को हम 50 लोगों की टीम दे देंगे और कहेंगे कि भाई आपको कंट्रोल करना है इस पूरी टीम को. नहीं, कुछ दायरा होगा, वहीं तक कहीं ना कहीं वो मैनेजर जो है वो कंट्रोल कर पाएगा, वहीं तक उसकी पावर कहीं ना कहीं काम करेगी. सो स्पैन ऑफ कंट्रोल हम इसे ही कहते हैं, कंट्रोल करने का दायरा. It basically refers to the number of subordinates that a manager can effectively supervise and control. Okay, so it basically determines that how wide or narrow organization's management structure will be. So depending upon that, दो होते हैं, होता है narrow span of control, एक होता है wide span of control. So narrow span of control में क्या होता है, जो मैनेजर है, as the name suggests itself, वो एक small number of subordinates को कहीं ना कहीं मैनेज करता है, which leads to close supervision. अगर लोग कम होंगे तो of course वो closely उन्हीं लोगों को देखेगा, लोग ज्यादा होंगे तो सबको देखना है तो वो इतना closely नहीं देखेगा. So it is basically suitable in the organization, the team जहां पर कम लोग हैं, वहां पर आप नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल कर सकते हो. एंड इट इज सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, जहां पर टास्क मुश्किल हो और जहां पर ज्यादा गाइडेंस की जरूरत हो, वहां पर आप नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल को अप्लाई कर सकते हो. But the disadvantage is like the more managers are required, it would increase the cost of management also, so it can slow down that decision making level also.
वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में बेसिकली मैनेजर जो है वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे. So it encourages this employee autonomy and faster communication, and it is suitable specifically for the routine task where less supervision is needed. But again the disadvantage can be कि मैनेजर्स जो हैं अगर वो इतने सारे लोगों को लीड करेंगे तो कई बार वो ओवरबर्डन हो जाते हैं, which definitely affects their psychological thing also, and that affects decision making power too, and lack of attention to individual needs. So once again, the ideal span of control, it depends on several factors, like again what the nature of the work is, the skill level of employees, the level what type of task is, whether it is easier, whether it is complex, and the management style of the organization again. So with this we are completing the third section. Let's move to the fourth section where we're going to talk about directing. Let's try to understand the concept of directing first. So when I talk about directing का क्या मतलब होता है? लीड करना. तो लीड करना, तो यहाँ पर हम लीडरशिप के बारे में बहुत बातें करने वाले हैं. So सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में समझते हैं डायरेक्टिंग के. So directing, it's all about guiding, it's about motivating, it's about leading people within an organization to achieve its objectives. So it really becomes important because ultimately workers are human and you can't predict humans. So आपको उनको मोटिवेट करना होगा, आपको उनको मैनेज करना होगा, एक ऐसा वर्कफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां पर इफेक्टिव वे में काम हो सके. आपको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, आपको उनके वर्क को सुपरवाइज करना होगा, एंड ensuring that everyone is working in the right direction. So that's what concept of directing is. If I sum it up for you, it's about ensuring that employees know what to do. ऐसा तो नहीं कि भाई एम्प्लॉयज को पता ही नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जाना है. So the concept of directing is just this, that you're providing direction to the employee. आप ये देख रहे हो, आप उनको लीड कर रहे हो, आप उनको फीडबैक दे रहे हो, एंड दैट फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव. इट्स नॉट लाइक कि भाई वो आपसे अच्छा कर रहा है, भाई जो वो है ही इज डूइंग बेटर देन यू. ये कौन सी बात है? आप उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, यू कैन इम्प्रूव. आप बस इस चीज पर ध्यान दो. व्हाई यू आर कंपेयरिंग? सो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. अगेन when I was working the organization, comparison बहुत होता था by the leader. So comparison नहीं होना चाहिए because it really affects the mind of the person who is working, वो demotivate होते हैं. So directing, it ensures that employees know what to do, how to do it, and are motivated to perform their task effectively. So it's about motivation also. Let's talk about the key elements of directing. So what can be the key elements of directing? 4 key elements are directing के: supervision, motivation, leadership, and communication. Let's talk about techniques of directing. So there are various techniques that the managers can use, to effectively direct their teams, and one of the first is supervision. They can monitor the performance of their employees. They can guide employees, give them feedback which is constructive or positive, and it helps prevent mistakes and ensures efficiency. Another important technique for directing is you're giving motivation. Motivation is really important, and not just motivating in terms of money, but you're motivating mentally, like giving recognition to employees and genuine praise so that they can perform. And at the end of the day, you have to remember this, that please never ever compare your employee with any other employee. कि नया employee आया, आप पुराने वाले employee को compare कर रहे हो कि भाई देखो तुम ये नया आया जूनियर है तुमसे और कितना अच्छा काम कर रहा है. अरे सबकी अपनी सिचुएशन होती है, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, समझने का तरीका होता है. यू कैन नॉट कंपेयर वन पर्सन विद अदर पर्सन. Everyone is unique in their own way, और सब अच्छा कर रहे हैं अपने वे में. You just have to give them constructive feedback. So again, another important technique for directing is motivation. Then leadership, providing direction through example, through influence. So leaders who are effective, they inspire their employees to work towards the organization goal. And another last but not the least important technique for directing is communication. And I would say communication is just not about speaking, it's about listening also. And listening इस तरीके से नहीं कि भाई वो बोलना बंद करे तो मैं बोलूं. Listening, genuinely listening to understand. So that again patience चाहिए उसके लिए. So again, communication involves giving instructions also, sharing company goals also, listening to employees' feedback, genuinely listening. Let's talk about importance of leadership. So importance of leadership में सबसे पहला तो आपको clear होना चाहिए कि leadership
जो एक अच्छा लीडर होगा इज ऑलवेज गोइंग टू मोटिवेट यू, इज ऑलवेज गोइंग टू इंस्पायर यू. सो leaders, they inspire, they motivate employees so that they can work harder and efficiently. Another importance of leadership is setting vision and direction, facilitating change. So leaders को ये पता होना चाहिए कि चेंजेस कभी भी आ सकते हैं, और अगर वो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेंगे टूवर्ड्स अ चेंज, तभी उनकी टीम लेके चलेगी. अगर लीडर ही घबरा जाए कि भाई चेंज हो रहे हैं, तो टीम कहाँ से मजबूत रहेगी चेंजेस के लिए. अगेन, बिल्डिंग टीम स्पिरिट, conflict resolution, influence and empowerment, these are all importance of leadership, and you can explain it in your own words. Let's talk about the next topic of this section, leadership style. Now, there are different leadership style that we have to talk about here based on their personalities, organization's need, and the situation. Let's talk about the first leadership style, which is autocratic leadership. As the name suggests itself, एक ही लीडर होगा, वही जो है वो अपने डिसीजन सारे ले रहा होगा. सो द लीडर मेक्स डिसीजंस यूनिलेटरली हियर, ओके. अकेला ही बंदा वो डिसीजन लेगा, वो किसी से इनपुट नहीं लेगा, एम्प्लॉय से इनपुट नहीं लेगा. सो एडवांटेजेस क्या है कि जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, सबसे आपको लेने की जरूरत नहीं है, ओके. इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस स्पेशली डिसीजन मेकिंग क्विक होगी. डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई मोरल कहीं ना कहीं डाउन होगा एम्प्लॉयज का, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस फील नहीं होगी, उनको लगेगा कि भाई इनसे तो इनपुट लिए ही नहीं जा रहे हैं. Let's talk about democratic leadership, which I think personally कि वो better है than autocratic leadership, क्योंकि यहाँ पर सबके opinions लिए जाते हैं. So democratic leadership is the type of leadership which includes employees in decision making, taking inputs from them and encouraging them कि वो अपने ideas share करें. So definitely एक motivation increase होती है, एक positive workforce environment create होता है, और एक better decision making हो सकती है when you take different people's inputs, क्योंकि आप पर्सपेक्टिव ले रहे हो, सबके एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं शेयर हो रहा है. बट अगेन डिसएडवांटेज भी है, जिस चीज का एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी, और डिसएडवांटेज ये है कि जब सबके इनपुट्स लोगे तो टाइम लगेगा. सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, स्लोअर है ड्यू टू द नीड फॉर कंसेंसस. Another important leadership style is laissez-faire leadership. So laissez-faire leadership, it's a type of leadership style where जो एम्प्लॉइज हैं इनको पूरी तरीके से फ्रीडम दे दी जाती है कि भाई वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करें, डिसीजंस लें और अपने वर्क को मैनेज करें. सो अगेन एडवांटेज ये है कि क्रिएटिविटी आप बढ़ावा दे रहे हो, क्रिएटिविटी के लिए इनकरेज कर रहे हो उसको, लोग इनिशिएटिव लें इसके लिए, लोगों को एम्पावर कर रहे हो, एक ऑटोनॉमी क्रिएट होगी अमंग एम्प्लॉइज. बट अगेन डिसएडवांटेज भी है कि कई बार एम्प्लॉइज में भी गलत काम कर ले, स्पेशली इफ इट्स अ जूनियर और लेस एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, तो वो स्ट्रगल कर सकते हैं इसके लिए, तो वहां पर लेज़र-फेयर लीडरशिप कहीं ना कहीं काम नहीं करेगी. Another important leadership style is transformational leadership. As the name suggests itself, it's about transforming the employees. It's about inspiring them and try to transform them and motivate them to achieve their extraordinary outcomes by sharing this or creating this shared vision. सो इसमें हम मोटिवेशन की बात करते हैं कि हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन दें, इन्फ्लुएंस करें उन्हें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, एक स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट को दिखाएं. और ये वहीं पॉसिबल है जहां पर एक एक्सीलेंट लीडर कहीं ना कहीं हो. Let's talk about the next topic, that is importance of motivation. मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस बताना मेरे को लगता ही नहीं है जरूरत है, आप सबको पता है कि मोटिवेशन कितनी जरूरत है. एवरीथिंग दैट यू नीड, दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, डिसिप्लिन एक अलग चीज होती है, बट डिसिप्लिन कब तक रखोगे, मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है. मोटिवेशन अगर होगी साथ में डिसिप्लिन, तो ही आप किसी काम में सस्टेन कर पाओगे. अगर मेरे अंदर ही मोटिवेशन नहीं होती कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो क्या मैं वीडियोस बना पाता? मैं 1 घंटे आपके सामने बैठा हूं. Since I'm having that motivation, then only I'm here and I'm teaching you those topics और नई नई चीजें लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मेरी मोटिवेशन है आप लोग जब मुझे प्रेज करते हो, कमेंट करते हो और लाइक करते हो वीडियो को और पसंद करते हो. That's what motivation for me is. So that's what the importance of motivation is. Like माफ कीजिएगा, not motivation. It is essential for ensuring that employees are committed to their work, that they are consistently performing at their best level, and it drives the individual to put in the effort which is required to achieve organizational and personal goal. So importance definitely hogi to increase productivity, to enhance the job satisfaction, to reduce employee turnover. Like jo employees motivated honge, like when I have worked in the organization, after working like
for 1.5 years I've left this organization because I was not motivated enough to do that job. Now, the last topic of this section is theories of motivation. So there are several theories that we need to talk about these are the theories that explain like what motivates the individual at work. So let's talk about these theories. The very first is Maslow hierarchy of needs. इनको मैंने डिटेल में बताया है अच्छी तरीके से, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने theories, motivation theories आपको बताई हैं, सारी motivation theories मैंने बताई है. When we talk about Maslow's hierarchy of needs, so Maslow basically proposed that the human needs, they are arranged in a hierarchy, basically in a pyramid, and individuals are motivated to fulfill these needs, and it started from the most basic to the highest level. So one of the first is the very basic need is जो सबसे bottom में आती थी वो थी not psychological, physiological needs. The basic needs like food, water, shelter, sleep. These are, in the workplace, this translates to like adequate salary, comfortable working conditions. So that's what your physiological need is by Maslow. Another second is your safety needs. Like you need security, you need safety. So in the workplace, if you try to compare it, the safety need by Maslow. So employees need job security. उनको job security चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उनको कभी भी निकाला जा रहा है. No. So there should be a job security, a safe working environment, and benefits as well. The third is social needs. So this is a need for belongingness, relationships, like social interaction, because human is a social animal. So interaction to karega hi. So it's about the need of relationship, belongingness, and interaction. So employees seek this positive workplace relationships and teamwork. Fourth is your esteem need, the need for recognition, the need for respect, the need for self-esteem. So of course, in today's time, more than anything else, employees seek this kind of thing. They need this recognition. They seek this recognition, this promotion and responsibilities that enhance their status. And the last is at the top, self-actualization. The need to achieve one's full potential. That's what self-actualization. And it is really, really difficult to achieve and reach that far. So in the workforce, if you look at it, it means self-actualization means opportunities for growth, opportunities for creativity, and personal development. Let's talk about Herzberg's two-factor theory. So it consists of basically two categories that impacts motivation. The first is hygiene factor. So hygiene factors are basically your external factor. Like it can be salary, it can be the working condition, it can be the job security, it can be the company policies. So they doesn't necessarily motivate, but if they're not going to be present, it would really cause dissatisfaction. So that's why I'm saying these are external factors. Then we have motivational factors, and they are very much internal factors. Like they're related to the job itself, like the recognition, the responsibility, the personal achievement. And I would say that these factors actively leads to higher motivation and job satisfaction. Another important theory of motivation is McGregor's theory X and theory Y. So McGregor ने basically दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज वर्कर्स के प्रपोज किए. थ्योरी एक्स में उसने एज्यूम किया कि जो एम्प्लॉइज हैं बेसिकली दे आर लेजी, दे डिसलाइक देयर वर्क एंड दे नीड टू बी कंट्रोल्ड और थ्रेटन टू बी प्रोडक्टिव. और दूसरी तरफ उसने थ्योरी वाइव में कहा कि उसने एज्यूम किया कि जो एम्प्लॉइज हैं they are naturally motivated and they enjoy their work and they seek responsibility. So theory Y suggests that employee basically thrive when they give this power or decision making ability and opportunities for growth. Last but not the least, again, the theory that we're going to talk about is Vroom's expectancy theory. So this Vroom's expectancy theory suggests that employees are motivated when they believe that their efforts really leads to basically performance. So the harder they work, the better their performance is. And performance leads to reward. Again, good performance will lead to rewards like pay raises, promotion, and rewards are valuable. So the rewards offered are something they desire. So all of these theories help managers understand
what drives employees and how to create an environment that fosters this high level of motivation, productivity, and job satisfaction. So with this, we have completed the fourth section as well. Let's talk about the last section, which is controlling. So we're going to talk about controlling mostly. So controlling, basically it's a process of monitoring and evaluating the performance. जो भी आपने प्लान किया, अब आप उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करोगे कि क्या चीजें प्लानिंग के हिसाब से हुई है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था क्या उसके हिसाब से काम हुआ है. सो वट एवर द गोल्स दैट यू हैव सेट इन द इनिशियल फेज, यू हैव टू चेक कि वो सही तरीके से चीजें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग या नहीं. So what you're doing is you are actually comparing the actual performance against whatever you have expected, whatever the planned objectives are, and if they're not in accordance with that, again you have to take corrective action for that if there are deviations basically. So if I sum it up again for you, what controlling is, so it is about ensuring that everything in the organization, it goes as planned. So if any deviation is there with whatever the plans are, managers have to take necessary actions or steps to bring operations back on track. So अगर हम बात करें क्या की स्टेप्स होंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस के, so सबसे पहला स्टेप होगा कंट्रोलिंग प्रोसेस का कि आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि आपकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड क्या है. यू हैव टू एस्टेब्लिश दिस स्पेसिफिक गोल और बेंचमार्क जिससे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओ. सेकंड इज मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो बेंचमार्क, जो सेट एक्सपेक्टेशंस या परफॉर्मेंस से क्या उसके हिसाब से जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हुई है या नहीं. That you're going to actually do in the third step, but here you are measuring the actual performance in the second step. So in the third step, you are actually determining whether the actual performance meets or falls short of your set standards. And in the fourth step, उस deviation के हिसाब से you have to take corrective action. So if the performance is up to the mark, that's great. If not, you have to take corrective actions to address the problem. Let's talk about principles of controlling. So there are several guiding principles that make the process of controlling effective. So the first is principle of alignment with goals. Like the control systems, it should focus on the key aspects or key areas that are critical to achieving organization goal. Again, principle of flexibility. Control systems होने चाहिए, they should be flexible enough, they should be adaptable enough to handle changes that's going on in the environment, and that also allows the organization to respond effectively to unforeseen circumstances. Then principle of accuracy, like the information used in the controlling process, it must be accurate and it must be reliable to ensure correct decisions are made. Principle of timeliness, controlling should be done on time again so that any deviation can be corrected before they can cause a significant damage. Let's talk about next topic, which is techniques of controlling. So बहुत सारी techniques हम इस्तेमाल करते हैं controlling process में in order to measure and correct the performance. Controlling का फंडा समझ गए ना, आपने जो भी प्लान किया था, एक्सपेक्टेशंस सेट करी थी, क्या वो एक्सपेक्टेशंस खरी उतरी हैं, क्या वो काम सही से हुए हैं, क्या सारी चीज़ें आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या वो मिलती जुलती है प्लान्ड एक्सपेक्टेशन से, ये या नहीं. ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हो कंट्रोलिंग में, आप मॉनिटर कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस को, आप देख रहे हो अगर डेविएशन है तो किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं. सो व्हाट कैन बी द टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल टेक्निक्स जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें आपकी आती है बजटरी कंट्रोल. सो एक आप फाइनेंशियल प्लान बनाओगे जहां पर आप बजट क्रिएट करोगे फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज बेसिकली, एंड देन यू आर गोइंग टू कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द बजटेड फिगर्स. और कोई भी डेविएशन अगर हुई फ्रॉम द बजट दैट यू हैव सेट, अगर उसमें डेविएशन है विद द एक्चुअल बजट, यू आर गोइंग टू bring spending or income in line with the expectation. Another traditional technique is statistical data analysis. Basically, you're going to use these mathematical terms like averages, percentage, and ratios to measure the performance. So, इससे managers trends पता लगा सकते हैं अच्छे decision लेने के लिए. Then we have break-even analysis. इसके बारे में आपने सुना होगा that this basically helps managers understand the level of sales required to cover cost. एक break even point के at least हम ROI तो cover कर ले, जितना हमने return लगाया है उतना तो हम cover कर लें, at least हम profit में नहीं पहुंच रहे हैं तो at least जितना हमने पैसे लगाए वो point तो हम cover कर लें, उसके ऊपर हमें profit हो जाएगा. So basically determining the minimum level of performance needed to avoid losses.
You can do internal audit as well. If you look at today's time, what can be the modern techniques? So MIS का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आजकल MIS को जो फॉलो कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड. तो बेसिकली दीज आर कंप्यूटराइज सिस्टम्स जो कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और real time data provide करेंगे to the managers so that they can make informed decisions and they can monitor performance effectively. So in today's time जब आपको जल्दी quick decision making करनी होती है, it's really important कि आप MIS का इस्तेमाल करो. You can use TQM, which is total quality management. So it's a continuous improvement approach that focuses on enhancing the quality of products or services. And how you're doing it? By involving all the employees in the organization. You can use KPIs. आप specific metrics का इस्तेमाल कर सकते हो in order to track the performance of critical activities, and it very much helps measure success in areas such as customer satisfaction, profitability and productivity. You can use Six Sigma. आजकल बहुत सारी job opportunities में आप ये job description में देखोगे Six Sigma. It's a data-driven methodology focuses on reducing defects and improving process quality to achieve near perfect outcomes. Let's talk about the last topic of this section, which is planning and controlling. So planning and controlling, let me tell you, are very, very closely linked, and they are often referred as, the Siamese twins of management, because they are somehow interconnected. So planning really sets the standards. Like in the planning phase, what you're actually doing is you're deciding your goals, you're deciding your to-do list, the tasks that you need to perform, how you're going to perform it, when you're going to perform it. You set standards for performance. And these standards are used as a benchmark in the controlling process. And controlling actually monitors the plan's execution. So controlling ensures that activities, they are in line with whatever the plan's in. And that's why I say that planning and controlling goes hand in hand. And they cannot be without each other. They're like this twin. So controlling monitors the plan's execution, planning sets the standards. So of course they goes hand in hand. Controlling provides feedback to planning. So if there are significant deviations from the plan, the controlling process identifies these gaps and send feedbacks to managers so that they can adjust future plans accordingly. And corrective action in controlling impacts future plan. And of course planning is forward looking and controlling is backward looking, if you look at it correctly, because planning focuses on future activity and sets a course for the organization, whereas controlling looks at past performance and then giving feedback to the planning process. So that's why I would say, if I sum it up for you, that planning gives the roadmap, controlling ensures the organization should stay on the course. So both functions are necessary for the organization to achieve its goal effectively. So with this, we have completed all the 5 sections of the subject fundamentals of management, और इसमें हर टॉपिक की मैंने बात करी है. अगर आपको इस तरीके की वीडियो समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. इस तरीके की और वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा. So let's end this video, and I'm gonna see you in next video. Till then, keep studying. Take care.